हेलो एक लेजेंडरी वीडियो गेम सीरीज़ जिसका नाम इवन एक मोस्ट कैजुअल गेमर ने एक ना एक बार तो सुना ही होगा। एंड भला क्यों नहीं, अलॉन्गसाइड गोल्डन 007, परफेक्ट डार्क, हेलो कॉम्बैट इवॉल्व्ड वो एक गेम था जिसने कंसोल्स में FPS गेम को वायबल एंड पॉपुलराइज किया था। बट हेलो डिड अ लॉट मोर देन जस्ट दैट। ये एक गेम है जिसने कंसोल स्पेस में एक्सबॉक्स को एक सॉलिड ग्राउंड प्रोवाइड किया था एंड ओवर द ईयर्स कंटिन्यूज टू डू सो। अगर निंटेंडो के पास है मारियो एंड प्लेस्टेशन के पास क्रेटोस, देन एक्सबॉक्स का मैस्कॉट हमेशा से मास्टर चीफ रहा है विद हिज आइकॉनिक ग्रीन म्योनिर आर्मर, काम पर्सनालिटी एंड AI कंपेनियन कोर्टाना, जिसने माइक्रोसॉफ्ट के रियल वर्ल्ड AI की नेम को इंस्पायर किया, शोइंग हाउ मच इन्फ्लुएंस हेलो हैज़ ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज ए होल। 2001 में अपनी शुरुआत के बाद ओवर द ईयर्स हेलो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मीडिया फ्रेंचाइजी में से एक बन चुकी है विद वीडियो गेम्स, बुक्स, मर्चेंडाइज and even an upcoming live action TV series. So Halo being such a big deal, काफ़ी surprising था कि मैंने ये सीरीज़ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की, समथिंग जो मैं चेंज करना चाहता हूँ बिफोर द रिलीज ऑफ Halo Infinite. So I brought the Master Chief Collection in July and started playing the original trilogy from the start. And so far, these are my thoughts on the series, starting with the original classic Halo Combat Evolved. सो हेलो कॉम्बैट इवॉल्व्ड एक गेम है जिसने FPS गेम्स में रीजनरेटिव हेल्थ एंड 2 वेपन रिस्ट्रिक्शंस के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज एंड इंट्रोड्यूस किया, स्टैंडर्ड FPS कंट्रोल्स को कंसोल्स में नॉर्मलाइज किया एंड इट हैड अ मल्टीप्लेयर जो कई लोगों के लिए स्लीपलेस नाइट्स एंड लैंड पार्टी का कारण बना। बेसिकली एक जॉनर डिफाइनिंग टाइटल जिसने आने वाले कई सालों तक काउंटलेस गेम्स को इंस्पायर किया, ट्रूली अ क्लासिक इन ऑल द सेंस। सो हाउ डज इट होल्ड अप आफ्टर 20 years? ऑनेस्टली सरप्राइजिंगली वेल। कॉम्बैट इवॉल्व्ड एक 20 years ओल्ड गेम है एंड ये डेफिनेटली कई वेज में अपनी एज शो करता है। वी प्ले एज मास्टर चीफ, एक बैडएस सुपर सोल्जर जिसका ऑब्जेक्टिव अपने कंपेनियन AI कोर्टाना को एलियन रेस के ग्रुप कॉल्ड कवेनेंट के हाथ लगने से बचाना है ताकि वो अर्थ के बारे में ना जान पाए। द गेम स्टार्ट्स ऑन पिलर ऑफ ऑटम, एक ह्यूमन मिलिट्री वेसल अंडर अटैक्ड बाय द कवेनेंट, जिस कारण ये शिप हेलो पर लैंड होता है, एक ह्यूज मिस्टीरियस रिंग जिसका साइज इतना बड़ा है कि इसे एक स्मॉल प्लैनेट कंसिडर किया जा सकता है। आफ्टर क्रैश लैंडिंग ऑन हेलो, चीफ पिलर ऑफ ऑटम के कैप्टन जेकब कीस को कवेनेंट से बचाने की कोशिश करते हैं एंड इस प्रोसेस में हेलो की ट्रूथ को अनकवर करता है एंड एक हॉरिफाइंग पैरासिटिक क्रीचर की रेस द फ्लड को डिस्कवर करता है, जिसके बाद ये एंटायर गेम फ्लड को रोकने पर फोकस करता है, एंडिंग विद डिस्ट्रॉइंग द हेलो। एंड ये मोर और लेस हेलो के एंटायर प्लॉट की समरी है जो बंजी ने काफ़ी सिंपल एंड ओपन एंडेड रखी है ताकि अगर हेलो एक हिट कंसिडर किया गया एंड फ्यूचर में उन्हें कभी एक सीक्वल बनाने का मौका मिला तो वो विदाउट एनी इशू स्टोरी को कंटिन्यू कर पाए। सो देयर इज़ नॉट मच रूम टू टॉक अबाउट द स्टोरी बिकॉज ये बेसिकली एज ए फाउंडेशन वर्क करती है फॉर द हेलो यूनिवर्स जिसे फ्यूचर में बंजी ने एक्सपैंड किया। स्टिल हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हेलो 2001 में रिलीज़ हुआ था एंड बैक दैन ऐसे कुछ ही FPS गेम्स थे जो स्टोरी पर हैवली फोकस करते थे। द गेम प्ले इज समथिंग वी रियली नीड टू टॉक अबाउट। 30 seconds of fun। ये हेलो कॉम्बैट इवॉल्व्ड एंड एंटायर हेलो सीरीज़ के गेम प्ले की फिलॉसफी है जो अकॉर्डिंग टू गेम डिज़ाइनर जेमी ग्रिशिमर हेलो के गेम प्ले को इतना फन बनाती है। बेसिकली एक 30 second लूप ऑफ फन गेम प्ले जिसे डेवलपर स्ट्रेच करके एक कंप्लीट गेम बना सकते हैं while doing different things on those 30 seconds, like players को different weapons, enemies, vehicles, level design and overall different scenarios provide कराना ताकि each encounter different enough हो to not make it feel repetitive but fun। ये गेम प्ले फिलॉसफी सो फार मुझे ऑल 4 हेलो गेम्स में देखने को मिली, बट मोस्ट अपेरेंट थी हेलो कॉम्बैट इवॉल्व्ड एंड हेलो 3 में, जहाँ ये क्लियरली विजिबल था कि कैसे डेवलपर्स ईच कॉम्बैट एनकाउंटर को डिफरेंट बनाना चाहते थे फॉर द लैक ऑफ वैरायटी इन अदर एस्पेक्ट्स। जो कॉम्बैट इवॉल्व्ड के केस में लेवल डिज़ाइन है बिकॉज हाफ वे थ्रू द गेम लेवल्स काफ़ी रिपीटेटिव होने लगते हैं एंड सम लेवल्स आर स्ट्रेट अप रीयूज्ड, जिन्हें बोरिंग होने से रोकने के लिए डेवलपर्स ने प्लेयर के लिए डिफरेंट सिनेरियोज बिल्ड किए हैं ताकि गेम प्ले को बोरिंग ना होने दें। इसका एक बिग पार्ट हेलो की गेम प्ले का सैंडबॉक्स नेचर है जो प्लेयर को अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करने के लिए टूल्स एंड लेवल्स प्रोवाइड करता है एंड नाउ ये प्लेयर पर है कि वो इन टूल्स को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। इस सैंडबॉक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है 2 Betrayals, कॉम्बैट इवॉल्व्ड का एक लेवल जो इसकी डिफ़िकल्टी के लिए काफ़ी इनफेमस है, बट एट द सेम टाइम ये लेवल एक ग्रेट एग्जाम्पल है हेलो के 30 second लूप एंड सैंडबॉक्स डिज़ाइन का बिकॉज ये गेम के वन ऑफ दी मोर ओपन एंडेड लेवल्स में से एक है जहाँ हमें मल्टीपल व्हीकल्स को यूज़ करने का मौका मिलता है लाइक बैंशी और गोस्ट, जिन्हें प्लेयर्स बोथ ट्रैवर्सल एंड कॉम्बैट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये सैंडबॉक्स हेलो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है
बिकॉज ये वन ऑफ दोज थिंग्स में से एक है जो इस सीरीज़ को अदर FPS गेम से डिफरेंट बनाती है, वो सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर वाइज, जिसे हम ऑलरेडी हेलो इन्फिनिट के मल्टीप्लेयर में देख सकते हैं. Weapons and enemy variety is also good. Halo has all the base FPS weapons like assault rifle, pistol, shotgun, 2 types of grenade, one sticky, other normal, and rocket launcher. All the weapons जो shooters में काफ़ी common हैं. But other than these, game में many alien weapons भी हैं, like the needler, plasma pistol, plasma rifle, and fuel rod gun. All the weapons have their uses. कुछ weapons specific enemy type के against huge damage करते हैं, and some none at all, like sniper rifle against the flood. Enemy variety is also pretty good. Game में many types of enemies हैं, from fodders like grunts to huge tanky enemies like the hunters, या फिर elites and flood with their own unique enemy types. Combat Evolved का enemy AI surprisingly advanced है. Enemies प्लेयर के हर एक एक्शन का रिएक्शन देते हैं, like कैसे grunts हमेशा ग्रुप में वर्क करते हैं, जिनके साथ एक elite उनका एज ए लीडर सपोर्ट करता है. So if players elite को मारते हैं, then all the grunts डर से कांपने लगते हैं and group strategy को तोड़ यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं. या फिर elites hiding behind cover after getting their shield discharged. Small additions enemies को काफ़ी character प्रोवाइड करते हैं and makes it more fun to fight against them. जहाँ वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ कर प्लेयर को एज ए ग्रुप अटैक करते हैं या फिर कवर छोड़ने के लिए फोर्स करते हैं by flanking them. Flood on the other hand अपने big numbers को एज एन एडवांटेज यूज़ करते हैं, जो इन सम ऑफ दिस एक्शंस प्लेयर्स पर हर तरफ से अटैक करते हैं. दिस इज़ वॉट मेक्स देम इंटीमिडेटिंग. एक ऐसी फोर्स जो सच ए शॉर्ट टाइम में अपने आप को मल्टीप्लाई एंड इवॉल्व कर सकती है. ट्रूली टेरिफाइंग. एंड दिस इज़ द ओवरऑल गेम प्ले ऑफ हेलो कॉम्बैट इवॉल्व्ड. नाउअडेज ये अदर FPS गेम से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट द थिंग्स इट डिड फॉर FPS जॉनरा एंड गेमिंग इन जनरल आर ट्रूली ग्राउंड ब्रेकिंग, जिसने फ्यूचर में रिलीज होने वाले ऑलमोस्ट एवरी सिंगल शूटर को वन वे और अदर इन्फ्लुएंस किया. Nowadays ये गेम भले ही अपनी एज शो कर रहा हो because of its repetitive levels, graphics and general gameplay, but it's still a great game. And a must play thanks to its still enjoyable gameplay, Bungie's imagination and creativity, Martin O'Donnell's amazing soundtrack, and most importantly, its legacy. Halo Combat Evolved truly evolved the first-person shooters, and the series continued to do so with the amazing sequels. First saw Halo, were you blinded by its majesty? Blinded? Paralyzed? Dumbstruck? No. Yet the humans were able to evade your ships, land on the sacred ring, and desecrate it with their filthy footsteps. Noble hierarchs, surely you understand that once the parasite attacked... There will be order in this council. You were right to focus your attention on the Flood. But this demon, this Master Chief... By the time I learned the demon's intent, there was nothing I could do. Halo 2 Combat Evolved की एंडिंग के राइट आफ्टर स्टार्ट होता है, जिसमें हम फर्स्ट गेम की एंडिंग के इम्पैक्ट को चीफ एंड कवरेंट एलीट आर्बिटर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. Halo 2 में हमारा सेकंड प्रोटैगनिस्ट, जहाँ एक तरफ हमें चीफ की जीत का जश्न देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर आर्बिटर की हार का नंगा नाच. कॉम्बैट इवॉल्व्ड ने हेलो यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड की थी, बट हेलो 2 वो गेम है जिसने इस फाउंडेशन को एक एक्चुअल इंटरेस्टिंग यूनिवर्स में इवॉल्व किया, एंड इवॉल्व इट डिड. बिकॉज ऑफ आर्बिटर हमें कॉवेनेंट को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है, एक पर्सपेक्टिव जिसे चीफ की नज़रों से देखना इम्पॉसिबल होता. कॉवेनेंट एम्पायर, डिफरेंट स्पीशीज़ की एक अलायंस कंट्रोल्ड बाय 3 रिलीजियस फैनेटिक्स जो हेलो को सेक्रेड रिंग्स मानते हैं, उनकी ग्रेट जर्नी एंड प्रोफेसी का एक हिस्सा. ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ हेलो 2, कवेनेंट एंड प्रॉफिट ऑफ रिग्रेट UNSC एंड अर्थ के न्यू मोबासा सिटी पर हमला करते हैं, एंड चीफ अलॉन्गसाइड बैडस सार्जेंट जॉनसन एंड कैप्टन मिरांडा कीज उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं. प्रॉफिट ऑफ रिग्रेट मौका देख अर्थ से भागने की कोशिश करता है, बट चीफ एंड टीम उसका पीछा करने में कामयाब होते हैं, जहां वो डिस्कवर करते हैं अनदर हेलो इन सॉल्यूशन 5. चीफ अपने कैंपेन में हेलो को डिस्ट्रॉय एंड प्रॉफिट को रोकने की कोशिश करते हैं, जहां दूसरी ओर आर्बिटर की जर्नी इज़ अबाउट डिस्कवरिंग द ट्रूथ. हेलो को बचाने की अपनी नाकामयाब कोशिश के कारण प्रॉफिट्स थेल वैडमी को अपनी रैंक से स्ट्रिप कर देते हैं एंड उसे एक हेरेटिक घोषित करते हैं, बट प्रॉफिट्स वैडमी को एक सेकंड चांस देते हैं एज एन आर्बिटर, एक ऐसा टाइटल जो उन अनस्टॉपेबल एलीट्स को दिया जाता है जो अपने टास्क्स में ग्लोरियसली फेल होते हैं. कुछ ऐसे एलीट्स जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स, कुछ ऐसे एलीट्स जो प्रॉफिट्स के खिलाफ एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं,
कुछ ऐसे लीड्स जिन्हें आर्बिटर का टाइटल देकर प्रॉफिट्स का पपेट बना दिया जाता है। यही थेल वैडमी की जर्नी है, प्रॉफिट्स का सच जानना एंड उन्हें रोकने की कोशिश करना। Halo 2 एक अमेजिंगली रिटन गेम है with a great story and even greater and memorable dialogues. But I can't say the same for some of the gameplay sections. While Halo 2 immediately एक huge improvement feel होता है on Combat Evolved, especially अगर हम anniversary की बात कर रहे हैं, the gameplay is silky smooth. Guns feel and sound amazing, and dual wielding is just chief's kiss. While the general gameplay is absolute banger, level design and balancing hit and miss है compared to previous game. Halo 2 के कई levels a lot more tighter and linearly designed है, जो कई great gameplay section से filled है, but most of the levels इस linearity की वजह से less sandboxy है, with some of them having very linear design. While the overall gameplay अभी भी काफ़ी सारे sandbox elements hold करता है, the levels are just not designed that way. Most of the levels indoor environments और tight places में set हैं, जहाँ हमें Combat Evolved जैसी freedom देखने को नहीं मिलती, something जो especially true है with Arbiter's levels. I love Arbiter's place in the story, but don't like playing his levels that much, because compared to Chief, most of his levels indoor locations में set हैं, जहाँ हमें same enemies से again and again and again continuously fight करनी होती है, and it gets less and less interesting with each encounter. Especially कुछ levels में जहाँ हमें लगातार flood से लड़ना होता है, and it's just not fun because of balancing. I played all of these games on Heroic, because for the most part ये most balanced difficulty है, and the way Halo meant to be played. And I agree with that statement because I had a blast playing these games, जो appropriately challenging and fun थे. But I can't say the same for many sections in Halo 2. Combat Evolved में few cheap enemies थे, जो player को one hit kill करने capable थे, but there were ways to survive those encounters, like level design जो players को proper cover provide करती है, and the health system जो player को एक second chance provide करती है to fix their mistakes. Halo 2 has changed in both of these fields, for better or worse. You decide. गेम में कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो प्लेयर्स को मिनिमल और बेयरली एनी कवर प्रोवाइड कराते हैं, एंड एडिंग द न्यू हेल्थ सिस्टम ऑन टॉप ऑफ दैट, जहाँ प्लेयर्स के पास बेसिकली कोई हेल्थ नहीं बट ओनली शील्ड है जो ईजिली ब्रेक होती है. एंड हियर्स व्हाई Halo 2 is the most difficult game in the trilogy. You get used to it, but jumping immediately from Combat Evolved to Halo 2 wasn't the most seamless transition and difficulty level. And here you have it. This is what Halo 2 is. A bigger, better and some aspects में hit and miss sequel जिसे most fans अपना favorite मानते हैं for many things. And I can easily understand that. Especially if हम story की बात कर रहे हैं, जो trilogy में definitely best है. And the anniversary cutscenes are a marvel to behold. Wish someday हमें एक CG Halo movie और series देखने को मिले with these kind of animations. I'll be honest here, Halo 2 एक great game है. And I can see why people love it so much. But ये definitely trilogy में मेरा favorite नहीं है. Might be because I don't have any nostalgia for it. Which in my opinion एक good thing है because I genuinely think ये game अपना one of the greatest game ever made का title well worth करता है. Truly one of the GOATs. Now, let's talk about the end of the trilogy, Halo 3 and its expansion/spin-off ODST. Halo 3 को मैं easily 3 words में describe कर सकता हूँ. Peak Halo experience. Except the story. So just like the previous game, Halo 3 Halo 2 के events के immediately बाद start होता है, जहाँ Chief Earth पर Covenant and Flood से लड़ता है, alongside the Arbiter. And one last time Flood को पूरी तरह end करने की कोशिश करता है. And that is pretty much what the story really is. Compared to Halo 2, Halo 3 की story less complex है, with the Arbiter being just a side character, जो pretty much पूरी story में कुछ भी significant नहीं करता, except completing his character arc. Still, it's really cool to see him and Chief fighting side by side. This time, story Chief and Cortana relationship पर ज़्यादा focus करती है, and I'm absolutely fine with that. The overall story might not be as well written as Halo 2, and believe me, it isn't,
but I don't really care because it's still good with some really strong and nostalgic moments, like the Covenant recreating the cinematographer, going back to the High Charity from Halo 2 and ending it the same way how it all began. A perfect conclusion anybody could hope for. Gameplay wise, Halo 3 Trilogy में easily the best one है, जो both Halo and Halo 2 के elements को improve करता है, but at the same time new things introduce करता है. Almost every single weapon is here, including Assault Rifle from Halo and Battle Rifle from Halo 2. All the other weapons like SMG, Plasma Rifle and Pistol, Needler, Anti-Sword and new addition like Gravity Hammer, जो absolutely glorious है. Other than these, game में few new equipments भी हैं, like Bubble Shield, Cloaking, Deployable Cover, Regenerator, and few others. You can even rip off turrets and use them like machine guns like an absolute badass. For vehicles, हमारे पास है Chopper, Wraiths, multiple variants of Warhog, Scorpion tanks, Banshee, Hornet, and many more. With all of these weapons, equipments, and vehicles, you can imagine how much sandbox potential Halo 3 has. जिसका कैंपेन पूरी तरह से फ़ायदा उठाता है, because Halo 3 has the biggest environments and sandbox set pieces of the entire trilogy, जिसमें हम मल्टीपल स्कैरेप्स से फाइट करते हैं while riding और flying different vehicles. ये set pieces truly amazing हैं, जिसमें players कुछ ऐसी things कर सकते हैं. This is the reason कि क्यों Halo 3 इस trilogy में मेरा favorite है, because it perfected the sandbox gameplay and paired with a good story with good pace, ये game just एक emotional joyride है from start to finish. As for multiplayer, I can't say much because मैंने इन games की multiplayer side पर ज़्यादा focus नहीं किया because they're more arcade nature and because मैं barely any matches ढूंढ पा रहा था. But from what we know, Halo 3 at the time of its release series का peak multiplayer experience था, with many maps and vehicles exclusive to this game mode. It was also the time जब Halo community most passionate थी, with people creating montages and machinima. And still to this day, so many people इसे best Halo multiplayer consider करते हैं, which is a big deal because almost every Halo multiplayer is said to be really good. There is a lot to love in this game, and I definitely love it for its amazing gameplay, a good concluding story, characters, and divine music. ऑर्बिटल ड्रॉप शॉक ट्रूपर और ODST फॉर शॉर्ट एक स्पिन ऑफ है Halo 3 का. सेट बिटवीन द इवेंट्स ऑफ Halo 2 एंड Halo 3, इन ODST प्लेयर्स रुकी एंड ODST टीम मेंबर्स की पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं, जहां वो न्यू मोम्बासा में एक क्रिटिकल मिशन के लिए ड्रॉप होते हैं. बट ड्यूरिंग द ड्रॉप रुकी एंड टीम सेपरेट हो जाते हैं, जहां स्टार्ट होती है रुकी की लॉन्ग नाइट, जहां वो न्यू मोम्बासा में अपने टीम मेंबर्स को ढूंढने की कोशिश करता है. ODST एक सेमी ओपन वर्ल्ड सेटिंग में सेट है, जहां हम न्यू मोम्बासा की रेनी स्ट्रीट्स में प्लेस टू प्लेस जा क्लूज गैदर करते हैं
विद ईच क्लू हमें टीम के एक अदर मेंबर को कंट्रोल करने का मौका मिलता है, विच इज़ रियली कूल इन माई ओपिनियन, बिकॉज विद ईच मेंबर हमें डिफरेंट सेट पीसेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है एंड कैरेक्टर्स को मोर पर्सनली जानने का। बट न्यू मोम्बासा की एटमॉस्फेरिक रेनी नाइट्स में जैज म्यूजिक के साथ यहाँ से वहाँ घूमना डेफिनेटली गेम का बेस्ट पार्ट है। इट फील्स सॉम्बर एंड मेलनकॉली, जहाँ पूरा सिटी डार्कनेस एंड एनिमीज से श्राउडेड है, विद रुकी टेकिंग मोर ऑफ ए स्टेल्थी अप्रोच, इवन दो गेम प्ले वाइज स्टेल्थ मैकेनिक्स बेसिकली नॉन एग्जिस्टिंग है। ODST एक मोर स्मॉलर स्केल डील है, जहाँ हम एज चीफ पूरे यूनिवर्स को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट डूइंग योर जॉब एज एन ODST मेंबर, जो गेम को एक काफ़ी डिफरेंट फील एंड टोन देता है, जहाँ प्लेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम वॉल्नरेबल फील करते हैं, बिकॉज हम एक बैड सुपर सोल्जर नहीं बट सिर्फ एक ह्यूमन है अगेंस्ट द कमरेंट आर्मी, एंड द गेम प्ले रिफ्लेक्ट्स इट एज वेल। सिंस ODST हेलो 3 का स्पिन ऑफ है एंड सेम इंजन में डेवलप्ड है, गेम प्ले वाइज ये बेसिकली 1-to-1 कॉपी है ऑफ दैट गेम, but with some added gameplay mechanics like more stealthy approach to gameplay, but it doesn't really work. So the overall gameplay really solid है, but the side pieces are the best thing about it. ODST में definitely series के some of the best vehicle sections हैं, जहाँ हम एक city में tank drive करते हैं and fly Banshee, and एक open battlefield में Warhawk. These sections are just really cool, जो इस more grounded game को कुछ वक्त के लिए power fantasy में convert कर देते हैं. Then the section ends and we're back to being rookie again with the feeling of hopelessness. As you guys might have noticed so far, मैंने Halo सीरीज़ के साउंड ट्रैक के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं की, बिकॉज मैं उनके बारे में सेपरेटली बात करना चाहता था। So in the Bungie era, Halo सीरीज़ के 2 लीड कंपोजर्स थे, मार्टिन ओडोनल एंड माइकल सैल्वाटोरी, जिन्होंने साथ मिलकर some of the most iconic साउंड ट्रैक्स कंपोज किए, like the classic Halo theme and Installation 4. Heretic Hero, One Final Effort, and many others. All of these soundtracks are just amazingly composed, जो इन गेम्स की मैनी मोमेंट्स को even further elevate करते हैं, चाहे हम बात करें स्टोरी में किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट की या गेम प्ले सेट पीस की। Without this memorable soundtrack, ये moments definitely lacking and less memorable feel होते। This is especially true with ODST, जिसका soundtrack entire trilogy में सबसे different है, with more of a somber and melancholy tone, जो players को hopeless feel कराता है, but at the same time there is a small glimmer of hope. ODST का soundtrack truly is गेम के one of the biggest strengths में से एक है, जो गेम के एटमॉस्फेयर को 4 चांद लगा देता है। Tracks like Deference of Darkness, Asphalt and Ablution,
Neon Knight, No Stone Unturned, and Finale. All of these tracks are just beautiful, जो मोमेंट टू मोमेंट गेम प्ले को एक completely different feel देते हैं. So far इन सभी Halo games का soundtrack unforgettable था, and I can't wait to see what future games has to offer. And with this, we're at the end of this journey. Halo एक सीरीज़ है जिसका नाम मैं at least last 10 years से सुनता आ रहा था कि कैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वीडियो गेम सीरीज़ में से एक है एंड क्यों ईच एंड एवरी गेमर को एटलीस्ट ये सीरीज़ एक ना एक बार तो खेलनी ही चाहिए. एंड आफ्टर प्लेइंग दीज गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इन स्टेटमेंट से 100% एग्री करता हूँ. आई कैन सी कि कैसे हेलो ने मिलियंस ऑफ पीपल्स के दिलों में जगह बनाई एंड क्यों ये गेम अदर FPS गेम्स के लिए इंस्पिरेशंस बने एंड स्टिल टू दिस डे काउंटलेस गेम्स को इंस्पायर कर रहे हैं. हेलो वन ऑफ दोज वीडियो गेम सीरीज में से एक है जो स्टिल टू दिस डे अपनी लॉन्ग रनिंग लेगेसी को ट्रूली डिजर्व करती है, एटलीस्ट दिस ट्रिलॉजी. एंड आई हाईली रिकमेंड एवरी फेलो गेमर टू एक्सपीरियंस दिस गेम्स वंस in their lifetime.